औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा जो सेगमेंट, आपने झंडा देखा होगा जनाब कनाडा डे का, वो साथ मेरे लगा हुआ है, तो इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि आज का हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है वो कनाडा डे के हवाले से, अगरचे कनाडा डे कल है लेकिन ज़रा अभी जनाब ये रात के 2 घंटे 1.5 घंटा बाकी है और उसके बाद जो है वो कनाडा डे ने स्टार्ट हो जाना है। तो नाज़रीन, तो एक तो चंद बातें जो तारीख के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस रोज़ जो है हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि कनाडा डे 1 जुलाई को हुआ क्या था, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए कि भाई हुआ क्या था। देखिए, इससे पहले जो है ना कनाडा के अंदर जो 2 बड़े सूबे थे, अंटारियो और क्यूबेक जो है, वो तो कंट्री कॉलोनी ऑफ कनाडा कहलाते थे, और जो कि ब्रिटिश और फ्रांस ब्रिटिश रूल्स के अंडर थे ये दोनों दोनों कॉलोनीज जो थी, एक क्यूबेक और एक अंटारियो। फिर क्या हुआ कि 2 और जो सूबे थे, 2 और प्रोविंसेस थे, न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया, इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 1867 को इस के साथ ज्वाइन कर लिया और एक कंट्री बना जिसका नाम रखा गया जनाब कंट्री ऑफ कनाडा। तो कंट्री ऑफ कनाडा जो है वो शुरू में उसके 4 सूबे थे जिन्होंने ये जो है 1 जुलाई 1867 को जो है ना वो जनाब कनाडा का जो है ना वो एक फेडरेशन कायम हुई। आप कहें पहली फेडरेशन जो है वो 1867 के अंदर कायम हुई और उसका नाम कनाडा रखा गया। इसी तरीके से हालांकि कनाडा की तारीख जो इस हवाले से तो आपको पता है कि पुरानी है, कि यहाँ पर फ्रेंच भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते गए और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जा किया, अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाई। लेकिन मेजर पार्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रिटिश कॉलोनियल थे उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया और ज़्यादा रूल्स जो है उन्हीं करा। फिर इन मुख्तलिफ फेडरेशन ने जो है ना आपस में ज्वाइन होकर कनाडा बनाया और 1867 1 जुलाई के ऊपर 4 जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे उन्होंने एक फेडरेशन कायम की, जैसा कि मैंने बताया। और फिर जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे जनाब, उनका नाम था चार्ल्स स्टैनले मॉन्क, जिन्होंने 1 जून 1968 को ये ऐलान किया कि हम जो है 1 जुलाई को जो है वो फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएंगे इस कन्फेडरेशन की और इस कनाडा की पहली कंट्री की। तो उस वक्त जो है इसको कनाडा डे नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको कहा जाता था डोमिनियन डे कहा जाता था। तो डोमिनियन डे उसका नाम रखा गया और वो डोमिनियन डे जो है वो फिर मनाया जाता रहा हर साल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरी जो, और इस बात की भी रखी गई कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टेरिटरीज जो थी और दूसरे प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश कोलंबिया था, बहुत सारे और जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस फेडरेशन का हिस्सा बनते गए। तो 1982 के अंदर जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब हमने ऐलान किया कि हम जो है वो ब्रिटिश से जो है वो लहदगी लेके एक हमारी अपनी डेमोक्रेसी होगी, हमारी अपनी यहाँ पर हम तमाम रूल्स अपने तरीके से चलाएंगे, 1982 के अंदर जो है वो डोमिनियन डे का नाम कनाडा डे रखा गया और उस वक्त के बाद से इसको जो है वो कनाडा डे ही कहा जाता है 1982 के अंदर, ठीक है ना। तो कनाडा, और जनाब ये आपकी 153 आज हमारी सालगिरह है, इस मुल्क की 153 ईयर्स गुजर गए हैं कनाडा डे को मनाते हुए और उस फेडरेशन को कायम होते हुए। तो ये तो था एक मुख्तसर जायज़ा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी आपने सुना होगा इंडिजीनियस पीपल के हवाले से एक बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि ज़ाहिर बात है वो इस मुल्क के बासी थे, जिनसे ये ज़मीन जो पहले इधर रहते थे, वो हुक्मरान थे, हमारे जो ये इंडिजीनियस पीपल थे, तो उनके से ये ज़मीन छीनी गई। ज़ाहिर बात है उस दौरान जो उनके साथ जुल्म रवा गया, तो एक अंदाजे के मुताबिक जो वो फैमिलीज़ थी इंडिजीनियस की, उनसे 1,50,000 बच्चे जो है वो उनको छीन दिया गया मुख्तलिफ फैमिलीज से और उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो है ना भेज दिया गया। और फिर इन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, तकरीबन जो है 1,000 ग्रेव्स मिली हैं और भी मिलने के इम्कान मौजूद हैं। बहरहाल ये कि उन बच्चों की ग्रेव्स मिली हैं, जाहिर सी बात उनके साथ कोई जुल्म रखा गया होगा, जाहिर बात है वो बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए। और उन रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर जो कुछ हुआ वो एक हमारी तारीख का बदतरीन हिस्सा है, जिसके ऊपर हमें अफसोस भी करना चाहिए और हमें अपोलोजाइज़ भी करना चाहिए इंडिजिनस पीपल्स के साथ कि जनाब हमने जो है आपके साथ ये जुल्म किया। और हमारे जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, ही इज़ रियली, आई रियली प्राउड ऑफ हिम, एंड कि हमें उनके ऊपर बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने आगे बढ़कर जो है इस मसले को पिछले 2-3 सालों से इसको भरपूर अंदाज में इसको एड्रेस कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हील अप किए जाएँ उनके ज़ख्म, उन लोगों के जो यहाँ के बासी थे, जो यहाँ के ओरिजिन थे, और किसी तरीके से उनको जो है वो मेन स्ट्रीम का धारा में लेकर आया जाए
ان کے ساتھ ان کے زخموں پہ پاؤں رکھ ان کے اوپر زخموں کے اوپر جو ہے مرہم رکھے جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کی جائے اور جو بھی کمپنسیشن گورنمنٹ یا دوسرے ادارے دے سکتے ہیں وہ اس کو دیں. تو یہ آج کا جناب اسی کے اوپر ہم اپنا کینیڈا ڈے کے اوپر ہی جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس پروگرام کے اندر آپ کو مختلف مہمانوں سے ملوائیں اور ان کے خیالات بھی سنیں کینیڈا اور ان کی اپنی اچیومنٹ کیا ہے ایز اے امیگرنٹ. ہمارے بہت سارے زیادہ تر مہمان جو ہیں وہ ہوں گے جو اس ملک کے لیڈرشپ کے رول کے اوپر ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی سے بھی ہیں, دوسری کمیونٹیز سے بھی ہیں, لیکن وہ امیگرنٹ ہیں اور ایز اے امیگرنٹ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو آئیے ہمارے پہلے مہمان سے ہم ملتے ہیں. تو میری پہلی گیسٹ جو ہے وہ سمیرہ علی ہیں, کونسلر بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹاریو لبرل پارٹی کی جو الیکشن ہونے والے اس کی نامینیٹڈ ممبر ہے ملٹن سے, اور 2 ہیڈس سجائے ہوئے اس وقت فی الحال انہوں نے, اور امید کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آنے والے الیکشنز کے اندر بہترین ریزلٹس لے کر آئیں گی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہترین سرو کریں گے. تھینک یو سمیرہ ونس اگین کہ آپ نے ہمارے پروگرام کمیونٹی ٹاک کو وقت دیا کینیڈا اسپیشل کے ڈے کے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ویری کوئکلی گو ود یو رائٹ. سو اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ پلیز گو ہیڈ. نہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی مجھے بلانے کا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ ونڈرفل انٹروڈکشن. آئی ایم انڈیڈ the counselor in Milton and also the Ontario Liberal Party candidate, very proud candidate to represent the Ontario Liberal Party from Milton. آج کا آپ کا شو کینیڈا ڈے کے بارے میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب یہاں پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کینیڈا کو چنا اپنے ملک کے طور پر, اپنے دوسرے ملک کے طور پر کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم سب یہاں پہ امیگرینٹس ہیں. لیکن ایک بات ہے جس کا میں ذکر اس سال کرنا چاہوں گی. ہمیشہ تو ہم بڑے پرجوش طریقے سے زور و شور سے کینیڈا ڈے مناتے ہیں, لیکن اس سال ذرا سا ہمارا دل دکھی ہے, اور اس کی وجہ خاص طور پہ ایک تو لندن کا جو حادثہ ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, لیکن جو انڈیجنس کمیونٹی کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. We cannot hide from it. We cannot run away from it. 215 bodies were discovered in Kamloops, BC, and 751 in Saskatchewan. تو ایک انڈیجنس کمیونٹی جو ہماری ہے جو اس وقت غم میں ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. We mourn with them. But this is also a time for reflection. ہم سب کو سوچنا ہے کہ جو پریولیج ہم انجوائے کرتے ہیں, دیکھیں جب ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں تو ہم وائٹ پریولیج کی بات کرتے ہیں اور ہم ریسزم کی بات کرتے ہیں, تو میں کہوں گی کہ وہی رولز یہاں بھی اپلائی کیے جائیں اور اپنی پریولیج ریکگنائز کی جائے, کیونکہ ہم سب کینیڈا موو ہوئے ہیں آن لینڈ دیٹ اوریجنلی بلانگس ٹو دی انڈیجنس کمیونٹی. That's very true. So we need to reflect on the dark roots of Canada's history. Only then, جب ہم acknowledge کریں گے کہ reality کیا ہے, history کیا ہے, only then we can move forward to a path of reconciliation and learning. تو میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سمیرہ آپ کا اس سال کینیڈا ڈے کیسا ہے, تو میرا اس سال کینیڈا ڈے سیڈ ہے, مارننگ میں ہے اور ریفلیکشن میں. آئی ریئلی نیڈ ٹو ڈو اے بیٹر جاب. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کروں گی, لرن اباؤٹ دا ٹرو ہسٹری آف کینیڈا اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف. اور میرا خود بھی یہی گول ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کروں اور کہ ریئل ہسٹری کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ ہم سب لوگ اس حوالے سے کافی بہت ساری جو پہلے ہم نے دیکھا کہ بلیک لائف میٹرز کے حوالے سے ایک موومنٹ چلی یہاں پر جو نارتھ امریکہ کے اندر چلی, اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ہے نا انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. اور اب یہ انڈیجنس پیپل کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی یعنی کہ ہسٹری ریکور ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے تھے, جو ظلم ہوئے تھے. اور میں اپنے انٹرو کے اندر وہ کافی ساری ڈیٹیلز جو ہے آلریڈی بتا چکا ہوں, لیکن بہرحال مجھے تو بہرحال یہ تمام چیزیں تو ہیں, اور یہ ہمیں ایز اے لائیو نیشنز, ایک انڈیپینڈنٹ نیشن اور ایک پراؤڈ نیشن, ہمیں اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگنی بھی چاہیے. ہمیں اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے جو جسٹن ٹروڈو صاحب ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ہی پلے اے وائٹل رول اس تمام کے اندر, اور خاص طور پہ انہوں نے تمام کمیونٹیز کو اور امیگرینٹس کو جس طریقے سے وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں, اور اسپیشل انڈیجنس پیپل کے حوالے سے انہوں نے خود بھی معافی مانگی ہے جو غلطیاں ماضی کے اندر ہوئی ہیں, اور یہ جو ریکور ہو رہی ہیں ساری چیزیں, اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ڈیفینیٹلی ہی اوپن ہارٹ from the management and from the government side. So that's a really huge work he is doing actually. اور ہم سب کو جو ہے وہ اس پر فخر ہونا چاہیے کہ we have a very humble and merciful president and prime minister in our country. تو میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے سمیرہ کہ what are the some really achievement as an immigrant
because we are all immigrant, right? So किस पे आप proud feel करती हैं that these are the really an achievement for me, myself and my family that I'm really proud of? देखें, सबसे बड़ी तो प्राउड होने की बात यही है कि हम कनाडा में आए और कनाडा ने हमें सराहा, हमें वेलकम किया और हमें अपने जो कहते हैं ना पैचवर्क के उसका हिस्सा बनाया। तो जब शुरू में मैं कनाडा में आई थी, ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो जाएंगे, तो हम लोग बहुत कम पैसे लेके यहाँ आए थे एक अच्छी जिंदगी की आस में। और शुरू में जैसे सब इमिग्रेंट्स को होता है कि बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई, बहुत सारी डिफिकल्टीज, कल्चर शॉक होता है आपको, वो सब पेश आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमें छोड़ दिया गया और हमारा कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे नेबर्स जिनको हम जानते नहीं थे, उन्होंने दे चेक्ड इन ऑन अस, जो इमिग्रेशन सेटलमेंट एजेंसीज हैं, दे हेल्प्ड अस। मैं उस वक्त इत्तेफाक से प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पास हेल्थ केयर नहीं थी, तो आसपास के नेबर्स ने दे गाइडेड मी एंड हेल्प मी। तो उस दिन से जो मैंने सीखा है, what truly means being a Canadian is actually giving back to the community. तो I'm really happy and proud कि आज मैं ये कह सकती हूँ कि because as a counselor I've been able to give back to my community, serve my community, service to the community. तो मुझे अपनी इस accomplishment पे खुशी होती है, फख्र होता है। और सबसे बड़ी हमेशा मैं कहूँगी मेरी accomplishment, मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो यहीं पैदा हुए हैं। We are raising them with good Canadian values of acceptance, of inclusion, giving back to the community. तो मेरा ये जवाब है इस बारे में। थैंक यू समीरा, हमें टाइम देने का और आज के कनाडा डे के ऊपर स्पेशल आपका पैगाम देने का। आई रियली थैंक यू बिकॉज आई नो दैट यू आर क्वाइट बिजी इन योर कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन, एंड इट्स गोइंग ऑन एवरी डे। आई नो दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू जहांगीर भाई, आप हमेशा आरिफ भाई मुझे याद रखते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर वाचिंग टोरंटो 360 टीवी एंड नो डाउट इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। थैंक यू। तो नाज़रीन, समीरा अली से हम बात कर रहे थे, एक जो हमारी काउंसलर भी हैं मिल्टन की, और जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं एमपीपी का लिबरल पार्टी की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि वो जो है वो जैसे उन्होंने कहा कि शी इज़ ए प्राउड कैनेडियन और शी वांट टू सर्व द कंट्री एंड शी इज़ वांट गिविंग बैक टू द कंट्री व्हाट शी अर्न फ्रॉम दिस कंट्री, एंड दिस इज़ रियली व्हाट वी आर। कैनेडियन असल में हैं ये कि जो हम यहाँ पर हमने जो कुछ हमें प्यार मोहब्बत और जो खलूस यहाँ पर मिलता है, हम चाहते हैं उसको पे बैक भी करें मुल्क के अंदर। तो हम तमाम लोग जो इमिग्रेंट आए हैं वो इस जज्बे से सरसार हैं। So on Canada special of the Community Talk in Toronto 360, my next guest is very near and dear to my heart, Sheref Sababi, the MPP Mississauga Erin Mills riding. And thank you, Sheref Sababi, that you give us the time on this special occasion of Canada Day program to Toronto 360. I'm really thankful to you. Thank you very much, Arif, and you know that I'm really honored to be with you here today to talk about Canada Day. And Canada Day for me personally, in a very simple words, it's celebrating our Canadian entity, being proud to be Canadian. And as we know, like even in my riding, 55% of my riding weren't born in Canada, from everywhere in the world, and Canada made us all one entity, Canadians, and become our home. And we have all the rights, and it's for me a very special occasion. I'm so proud to be Canadian. I'm so proud of being able to be part of that great country, Canada. And again, like I'm very passionate about talking about Canada because of all the good things, all the benefits, the gifts Canada gave us all as an immigrant. And I'm so happy to celebrate. I'm celebrating myself with Canada Day. And again, like we have in this occasion to understand that Canada Day is day for all the country, all the Canadians. And there's things bad happened in the history. I'm confirming, and I am giving condolences to the indigenous, and I understand their sorrow. I understand their sadness, and there's nothing can be said to justify
what happened. So what happened is bad, is sad, is not acceptable, and there's no words can be said to compensate for how bad it is, or compensate the families for losing their dear kids, and it's a horrible thing. But that's not to say that this will change the way we are proud of our Canadian heritage, our Canadian country, as a country as Canada. Again, like, it's a process. We need to confirm, acknowledge, agree, start a healing process, consolation, and move on. And more important is learning the lessons so that that never happen again. And I don't think that could happen in our time because of the media and connections and everything else. It happened in Nobody say I would anything say now. in Nobody, yeah. dark time of the history. But again, like, that's not to say or justify that. There's nothing can justify that, and it's important to acknowledge it, and to, if needed, apology. Whoever is responsible, if there's people responsible for that, get acknowledged. But we need to start the healing. We start to go back as in one entity, Canadians, and we move on and continue building our relation, continue building our country. So the most important thing is, Sheref, as you mentioned, that this is our country for everyone who are living here as a Canadian, is irrespective of their race and genders and whatever they have the backgrounds, languages, or whatever they are coming from as an immigrant, or they are coming from as a colonial, they are coming as a indigenous people, right? So this is a country for everyone. And this is a time that we have to reconcile what the mistake we did in the past. This is the reconciliation time, and we have to really, it's a very important responsibility come on your shoulder that our justice system should be so pure and so is having such a great standards that it will provide the justice to each and every person of this country. Because without the justice, it's not possible that any country become the greater. So I think this is a huge responsibility. The people like you who have the responsibility in the parliament as well. So this is one of the area. I think we have to really reconcile ourselves that, okay, we want to provide a great justice system in this country, irrespective of the race, irrespective of their gender, irrespective of their color, irrespective of their language, irrespective of their background, whatever that is. This is a country for everyone, and we all are proud Canadian, and we work together. So I want to ask Sheref Sababi, as an immigrant as well, that Sheref, what are some great achievement of your life that you want to share with our audience on this Canada Day? Well, as I mentioned, like, being a new immigrant to Canada, starting from scratch, coming from a professional career, being the regional IT manager for Middle East, coming here, starting from Tim Horton night shifts, baking donuts and serving coffee, and building up, going back to my career, managing network of major banks, joining major companies, big communication companies, building my professional career, growing my family. And then I start teaching in George Brown and then Centennial, so being in academia as well, then approaching politics and become a politician or a representative. I wouldn't name myself ever a politician. I'm naming myself a representative for the people, so that's I very can true. be their voice. No, I see you as you are a serviceman for the people. I see that you are always available for the people, irrespective of their background. I see you, and I really appreciate all the efforts, especially in the errand mills riding. Thank you are a great MPP of that riding, and you are providing a lot of services to each and every community, and that's a great thing. Something really we all have to be proud about, that we have a good representation in the parliament as well. So yeah, the major achievement, I would say, is being able to gain the respect of the people and gaining their vote and gaining their trust to be their representative. That's the biggest honor I would say anybody, not only me, but anybody can have. Thank you, Sheref, for giving us this time. And what is the last message you want to give to the Canadian on the Canada Day?
My last message is history is filled with very shameful things. And I think I spoke to a very prominent person, political person. I wouldn't name names, but it was a keen discussion about a genocide happened in the history, and there was a big discussions around that. And I said, like, I'm not holding you responsible. I'm holding your government responsible. I'm holding nobody responsible. I'm saying, at least, what make people feel better, what make people be ready to move on, is to acknowledge Yes. their pain, acknowledge their wrongdoing, acknowledge that yes, we know that this is bad, but we are ready to move on and we be one. And the great nation have this attitude actually, that they will acknowledge, they will ask the forgiveness, they will compensate, and they move on. That's how the history will move. And definitely, there is no perfect country in the world. There is not some bad histories attached with that one. And thank you, Sheref, once again for giving us the time on Community Talk Toronto 360. I really appreciate your time. Thank you. Anytime, Arif. And a happy Canada Day for everyone. Thank you. तो नाज़रीन, शरीफ सबाबी साहब से हमारी बात हो रही थी, और जैसे कि आपने देखा कि हमारे जितने भी मेहमान आए हैं उन्होंने इंडिजीनियस के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी एक तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम सब लोग। और जैसे कि मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि कोई 1,50,000 बच्चों को जो है उनके घरों से, उनके वालिदैन से उठा लिया गया और उनको रेजिडेंशियल स्कूल का हिस्सा बना दिया गया। और उसके बाद जो है हमें अब जो है वो ग्रेव्स मिल रही हैं उन बच्चों की। 1,000 ग्रेव्स अब तक मिल चुकी हैं, हो सकता है कि और भी मिले। लेकिन बहरहाल जो औरतों और बच्चों के साथ जो ज़ाती माजी के अंदर हुई है, अब मैंने जैसे समीरा से बात करा था तो हमारे जो प्रीमियर हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने बड़ी सीरियसली, जब से वो गवर्नमेंट में सेकंड टर्म में आए, उन्होंने बड़ी सीरियसली इस इश्यूज़ को लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कंपनसेट करें और अपोलोजाइज करें और मूव ऑन करें हिस्ट्री को, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बैड डार्क एरा ऑफ आवर हिस्ट्री एज वेल। तो मेरे अगले मेहमान जनाब जानी मानी शख्सियत हैं GTA की, बड़े ज़बरदस्त वॉलंटियर हैं, बड़े ज़बरदस्त सर्व करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मैंने उनको कौन कौन से प्रोग्रामों में नहीं देखा। और जनाब स्कारबरो का इलाका जो है वो मज़हर शफीक का अगर नाम ना हो स्कारबरो एरिया के अंदर, तो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती उनके नाम के बगैर। और मज़हर शफीक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज ए इमिग्रेंट इन दिस कंट्री, और उन्होंने जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी के को साथ लेकर चले, कितने प्रोग्राम जनरेट किए हैं वहाँ पे। आई माई सेल्फ इज़ विटनेस एंड मैंने लास्ट 15-16 ईयर्स से तो मैं उनका नाम जो है वो गूंजता हुआ सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ उसके अंदर। और मज़हर शफीक साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जो है वो, आपको सबको पता ही होगा कि ओंटारियो लिबरल पार्टी की जो स्कारबरो सेंटर का जो इलाका है वो उस राइडिंग से जो है आप इस दफ़ा इलेक्शन फिर लड़ रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मज़हर शफीक साहब जो है इस दफ़ा एक ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट चलाएंगे और उस इलाके से जो है सीट्स को निकालेंगे लिबरल पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर शफीक कि आपने टाइम दिया टोरंटो 360 को। आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर सो काइंड कि आप हमेशा मुझे जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं और मुझे मौका मिलता है कि मैं अपनी ऑडियंस और अपने वोटर्स और अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ आपके चैनल के थ्रू और आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बातचीत कर सकूं, और थैंक यू फॉर दैट। तो मज़हर शफीक, पहले तो ये बताइए कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि हम कैनेडियंस हैं और इमिग्रेंट आए हैं और हमारे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट्स होता है, लेकिन इस दफ़ा जाहिर सी बात है कि जो कनाडा डे है वो कुछ दुख भरी दास्तानों के साथ भी आया है। कुछ वाक़यात हैं जिसने इस पूरे कनाडा, और कुछ कोविड-19 का भी हमारे पूरे इसके ऊपर असरात भी हैं। तो इस कनाडा डे को आप कैसे देखते हैं, इस दफ़ा के कनाडा डे को? आरिफ भाई देखें, ये कनाडा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो जाहिर है कि खुशी होती है कि हम कनाडा की कॉन्फेडरेशन जो है उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जैसे कि कोविड की जो सूरत हाल चली, फिर उसके बाद जो अभी इंडिजिनस लोगों के साथ जो अभी जो बात हो रही है, जो कुछ जो है डिस्कवर हुआ, दैट इज़ रियली सैड। और उसमें जो है मेरा ख्याल है सारे कनेडियंस जो हैं वो इस बात पे अफसुर्दा हैं, और इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा का इजहार किया जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी हिस्ट्री, अब ये तो हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन ये है कि जो कुछ भी हुआ मेरा ख्याल है कि ये अच्छा नहीं हुआ। और
کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس بات پہ ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ پاس میں جو ہوا ہمیں اس چیز کو ایڈریس کر کے اور موو آن ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں میک شیور کرنا ہے کہ کینیڈا جو ایک بیوٹیفل لینڈ ہے, جو ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے, جس نے دروازے کھولے پوری دنیا کے ملکوں سے لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ آئیں, بسیں اور اپنے آپ کو جو ہے یہاں پہ ترقی کریں. وہاں پہ انڈیجنس کمیونٹی جو کہ یہاں کی مین جو یہاں کے لوگ تھے, جو یہاں پہ رہنے والے تھے, ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آئی اوپنر ہے. اور ہمیں جو ہے میک شیور کرنا ہے کہ پاس سے, ہسٹری سے ہم نے لیسن لینا ہے اور اس لیسنس کو لرن کرنا ہے ہمیں, اور میک شیور کرنا ہے کہ ہم موو آن ہوں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کینیڈا کی جو چاہے وہ لبرل پارٹی ہو, چاہے وہ کنزرویٹو پارٹی ہو یا این ڈی پی ہو, تینوں ہی بڑی پارٹیوں نے جو ہے نا اس کو ریئلائز کیا ہے, اس تمام ایشوز کو, اور اس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ دس از اے ٹائم کہ ہمیں ریکنسیل کیا جائے اس پورے ایشوز کو, اور اکنالج کیا جائے, اور اگر کہیں پر غلطی ماضی کے اندر ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نیگوشیٹ کیا جائے, اس کو جو ہے وہ اس کی اپولوجائز کیے جائیں, اور جو کنسرنس باڈیز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن اس حوالے سے دیا جائے, کوئی ریلیکسیشن دیا جائے. اینڈ پریمیئر جسٹن ٹروڈو پلے اے ویری وائٹل رول, انہوں نے تو ڈیفینیٹلی ایک وائٹل رول ادا کیا ہے. لیکن دوسری پارٹیوں کے اندر بھی ایرن اور ٹول کو میں دیکھتا ہوں, وہ بھی اس حوالے سے ویری پازیٹیو ہیں. اور یہاں سے ہمارے این ڈی پی کے جگمیت سنگھ صاحب, ہی از آلسو ویری آپٹیمسٹک اینڈ ویری پازیٹیو, اور بہت فرنٹ لائن کے اوپر آ کے انہوں نے بھی جو ہے اس ایڈریس کو ایشو کیا ہے. تو ایک تو یہ سی ظاہر سی بات ہے, لیکن ایز اے کینیڈین, ایز اے امیگرنٹ کینیڈین, مظہر شفیق سے اگر میں پوچھوں کہ مظہر شفیق ایز اے امیگرنٹ, ایز اے کینیڈین, آپ کی زندگی کی کیا بہترین اچیومنٹ ہیں جو آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر, آئی آلویز فیل پراؤڈ کہ ان 2000 میں جب میں آیا تھا یہاں پہ ایز اے امیگرنٹ, اور جب میں پیئرسن ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تھا, تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ویئر آئی ول گو, اور کہاں پہ میں جا سکوں گا. اور آئی واز نروس, اور آئی ڈونٹ نو, کیونکہ کینیڈا کے بارے میں جو باتیں سنی ہوئی تھی کہ یہاں پہ بہت مشکلات ہیں اور بہت سارے چیلنجز ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں لیکن ہماری کمیونٹی نے بہت نام بنایا کینیڈا میں. آپ کو ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں, چاہے وہ ہیلتھ کا پروفیشن ہو, چاہے وہ آپ کا جوڈیشری کا پروفیشن ہو, چاہے وہ آپ کا انجینئرنگ کا پروفیشن ہو, چاہے وہ آپ کا پالیٹکس کا پروفیشن ہو, چاہے وہ جرنلزم کا پروفیشن ہو, کوئی پروفیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں اپنا نام منوایا ہے. اسی طرح میں نے بھی دوسرے امیگرنٹس کی طرح میں نے بالکل اسکریچ سے, زیرو سے, سیکیورٹی جاب سے سٹارٹ کر کے, اور جو چیلنجز تھے جیسے دن میں جاب کرنا, رات میں جاب کرنا, دن میں یونیورسٹی جانا, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا, یہ وہ سارے چیلنجز تھے جس میں سے میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک گزرا, اور ہر امیگرنٹ جو آتا ہے وہ گزرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں جس پوزیشن پہ کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے, آئی ایم لبرل کینڈیڈیٹ اور الیکٹڈ نامینیٹڈ لبرل کینڈیڈیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اچیو کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ کینیڈین جو ہے سوسائٹی, بلکہ ہماری کمیونٹی اور بہت ساری اور جو میں سمجھتا ہوں کمیونٹیز ہیں, اور جو کینیڈین سوسائٹی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا کردار ہے کہ ایک باہر سے امیگرینٹ آ رہا ہے, وہ اس قابل ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بن رہا ہے, اور زیرو سے سٹارٹ کر کے آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جی یہ بڑی آنر ہے میرے لیے, اور میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نہیں ماشاءاللہ, یو ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جس طرح سے مسلم کمیونٹی نے پورے کینیڈا کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے, اینڈ دے ناٹ اونلی دا سوشلی, پولیٹیکلی, پروفیشنلی, انہوں نے ہر شعبے کے اندر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ابھی تو مطلب آپ دیکھیں کہ چاہے وہ جسٹس سسٹم ہو, اس کے اندر بھی جو ہے الحمدللہ ایڈمنٹن سے جو ہے وہ ایک ریکگنائز پوزیشنس کے اوپر ایک مسلمان جو ہے وہ اب آیا ہے, اور دس از ون آف دا پراؤڈ مومنٹ ہے ہم تمام ہماری کمیونٹی کے لیے, اور وی ایز اے کینیڈین وی آل ہیو ٹو پراؤڈ. تو آخری کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے مظہر شفیق تمام آڈینس کو ٹورانٹو 360 کے اور کمیونٹی ٹاک کے؟ سر میرا پیغام تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بیوٹیفل لینڈ اور بیوٹیفل کنٹری میں آنے کا ہمیں موقع ملا, اور نہ صرف یہاں پہ آئے بلکہ آ کے ہم نے اس سوسائٹی کے اندر کام کر کے دکھایا, اور
ना सिर्फ ये कि सिर्फ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बल्कि हमने ओवरऑल सोसाइटी के लिए, आप हमारी कंट्रीब्यूशंस देख लें, चाहे वो हॉस्पिटल्स की कंट्रीब्यूशंस देख लें, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में देख लें, चाहे किसी भी सिस्टम में, हमने हर जगह के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है। और खुदा का बड़ा एहसान है कि ओवरऑल जो कनाडा है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी एक्टिवली काम कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, मेरी गुजारिश होगी सब लोगों से कि प्लीज इसको कंटिन्यू रखें। हमारी आने वाली, अब हमारी अगली जनरेशन जो है वो तैयार हो रही है माशाल्लाह से, यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, और हमारी नेक्स्ट, हमने जो कुर्बानियां दी थी वो उनको, वो चीज़ों के उनको कुर्बानियां देने के बाद माशाल्लाह से यहाँ से वो एजुकेशन लेके यहाँ के मेन स्ट्रीम सिस्टम में वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब उनको इसी तरीके से जिस तरह से हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की है, इंशाल्लाह ताला वो अपना पार्ट अदा करेंगे और इस सोसाइटी में जो है बेहतर से बेहतर किरदार अदा करेंगे। मेरा ये है कि जो सब लोगों को यही होगा कि प्लीज इस सोसाइटी का हिस्सा बने, हर जहां पे भी आप मौजूद हैं उसमें आप अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करें, ताकि इनको, कनाडा सोसाइटी को, इनको सबको पता चले कि ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं ये हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं और ये कितने कंट्रीब्यूट करते हैं इस सोसाइटी के लिए। तो ये हम सब के लिए माशाल्लाह से बड़ी इज्जत का मकाम बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर का, आपके टाइम देने का, वक्त देने का इस कनाडा डे के स्पेशल प्रोग्राम पे। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। मुझे पता है कि आपको डोर नॉकिंग के लिए भी जाना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है डॉक्टर AQ राना, जो कि लीडर, फेडरल लीडर हैं सेंटर्स पार्टी ऑफ कनाडा के। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम AQ राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी नई पार्टी है, हमने लास्ट टाइम आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। कनाडा डे का स्पेशल डे है और जाहिर बात है स्पेशल डे के ऊपर हमारी ख्वाहिश होती है कि तमाम जो लीडरशिप है यहाँ पर, जो मुसलमानों की लीडरशिप है या किसी भी जमात के अंदर है, आप तो खुद रुए रवा हैं इस पूरी पार्टी के, तो आप कनाडा डे के ऊपर क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? Canada is a beautiful country. It stands for freedom of all communities, and it stands for human rights and human values. And however, we still have a lot of room for improvement, especially with our indigenous communities and minorities. And we have to work together to build a strong, united, one nation to have a prosperous and united Canada. So, Dr. AQ Rana, I know that on the politics side, you still not have many achievements to give to the world, because it's a very newly formed party and you are still struggling that you will form and you will bring the leadership and membership into your party. But your personal achievement, I know that. And so, where Canada is standing on this Parkinson disease, how many patients we have, and what is the risk factors are there? What are the something that you want to share with our Canadians? So there are about 100,000 patients with Parkinson's in Canada. However, the number of Parkinson's patients globally will maybe double by 2040. The number of these patients is increasing. One of these factors is aging. We have more aging population, and Parkinson's affects all communities, all types of people, and Parkinson's is a chronic, disabling neurological condition, and people gradually become dependent upon others, and for their personal care, they start needing help as the time goes. So, what is your some of the personal work you are doing as in knowledge, as a neurologist, as a specialist for the Parkinson's disease, to really rectify this issue within the Canadian and to helping out those people who are in this disease? One of my main responsibilities is clinical. I work in a clinic where I see patients every day, every single day. These patients, many of these have Parkinson's and other neurological conditions such as dementia. So that's one responsibility. And these are not just the elderly patients, but there are patients in 20s who have Parkinson's. So that's one role I play. In addition to this, I founded a charity, World Parkinson's Program. This charity is officially registered in Canada, but it does global work. So what we do is
very unique than all other charities. Most of the charities focus on education and research, but we provide medications to patients who cannot afford to buy medications. So it's global, it's irrespective of where patients are, what is their race or ethnicity. So we have a network all over. So other neurologists approach us if they have patients who cannot buy medications. So that's type of work we do. Thank you, Dr. Rana, for giving us this time, because I know that I just want to call you. I know that you are outside, and this Canada Day is special, and this is very important that we will take some of the words from you as well. And I really appreciate your time. Sure, thank you for having me. थैंक यू सर। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर A.Q. राना साहब। डॉक्टर A.Q. राना साहब जो है सेंट्रल पार्टी ऑफ कनाडा से इनका ताल्लुक़ है। हमने कनाडा डे के स्पेशल प्रोग्राम के अंदर उनको मदऊ किया और हमने उनके हवाले से पूछा। बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और बड़े ज़बरदस्त इदारा भी चला रहे हैं पार्किंसंस के हवाले से, और दुनिया में जहाँ जहाँ मरीज़ पाए जाते हैं उनकी मदद भी करते हैं। तो नाज़रीन, मेरे अगले मेहमान जो हैं वो MP का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं मिल्टन पार्टी से और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से जनाब उनका ताल्लुक़ है। बड़े ज़बरदस्त सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर और प्रोफेशनल भी हैं, और अरसा दराज से जो है, जब से मैं उनको देखता हूँ काफ़ी अरसा गुजर गया है कि उन्होंने यानी कि अगर इस मुल्क के अंदर वो आए हैं और यहाँ की सर्विसेज से फ़ायदा उठाते हैं, तो उनकी हर दम ये कोशिश होती है कि पे बैक किया जाए, जो कुछ हम इस मुल्क से हासिल कर रहे हैं उसको पे बैक भी किया जाए। तो मेरे अगले मेहमान आप तमाम जान गए होंगे कि मिल्टन के जनाब रूहे रवां और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जनाब नदीम अकबर खटाना साहब। शुक्रिया नदीम, आपको एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक को टाइम देने का। और टोरंटो से आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है कनाडा डे के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जनाब कनाडा डे के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मारूफ भाई, बहुत शुक्रिया। आपका प्यार है, आप हमेशा बुलाते हैं, हम हाजिर हैं। तो कनाडा डे पे एक तो सबसे पहले वुड लाइक टू से हैप्पी कनाडा डे एवरीवन। I hope everyone has a beautiful weekend. This will be the first weekend where many of us are going out and enjoying some quality time with our families. I just wanted to say that please make sure you continue to follow safety guidelines. I'm so grateful that cases have gone down, but because we're so close to putting this behind us, it is more important that ever that we do everything we can to protect ourselves, our families, our friends. We must be mindful of the Delta variants, which can still pose a major risk of setting us back. So I wish all your viewers a beautiful weekend with lots of love. And I hope everyone will enjoy the Canada Day weekend. Thank you, Nadeem, once again, and I really appreciate always that you always on one call behind. Just we give you a call and you are there, and I really appreciate your time as well. So, as an immigrant, Nadeem, you are many years now, and Alhamdulillah that you are the proud Canadian as well. So, what are some good achievements that you want to share with our audience of Toronto 360 and Community Talk? Yeah, sure. Everybody, as an immigrant, Canada means so much to me. I came to this country seeking a better life and choose to come here because it's truly a place of opportunity and inclusion. I came as an immigrant some 25 years ago, and today I stand as a candidate for Parliament in Milton. This is truly a uniquely Canadian experience. I choose to get involved. That I say I got involved because I am an immigrant who is committed to reconciliation. Our leader, Aaron O'Toole, has said that a conservative government will be committed to a renewed nation-to-nation relationship with many communities, indigenous peoples, based on recognition of rights, respect, cooperation, and partnership. I got involved because my children are starting to feel like the dream of home ownership is slipping away from them. We must better manage
our economy and ensure that we secure our future. In Canada, we cannot have a generation that feels we have completely abandoned them. I got involved because I think it's important to tackle the issue of Islamophobia, one that has literally killed Canadians and continues to pose a threat to our harmony. That's very true. So, That's very true, Nadeem. yeah, And then, Nadeem, one of other things that I want to these are the definitely some of the remarkable things that we all have to care about. What do you think that what type of a justice system we should have, and we can reconciliation we have to do on this special day of Canada Day today? What are the something that you want to see in the future in our justice system? Yeah, I think it's important to recognize that there were grave injustices done that we must not cover these things up. The work being done now to shed light to some of these horrific acts is much needed. A wake-up call for all of us. Again, we must be truly committed to reconciliation. The recent revelations have shaken all of us and provided an opportunity for collective reflection. Before even deciding for me to enter in politics, I spent a lot of time reflecting on what it means to be a Canadian and what kind of country I want us to be. I feel very strongly as a Canadian, as an immigrant, that we must take reconciliation more seriously. I ask how, that these things will happen. I'll be spending it, with, enjoying these beautiful things around us in this country. Again, back to your point, Canada Day is coming. And I request everyone to spend the time with your family. I'll be spending it with my family, with my wife, with my children. We'll go out for dinner and enjoying the outdoors. Thank you, Nadeem, that you give us the time on this special day and special occasion of Canada Day. And if you want to give a final message to all the Canadians and our viewers about the Canada Day, I really appreciate. Yeah, again, my last message at the Canada Day is that, again, happy Canada Day, everyone. As I said earlier, I will be spending time with my family, my wife and my children. We'll be going out for dinner and enjoying the outdoors. And I hope everyone else will do the same. Thank you, Nadeem, for giving us the time once again. And I really appreciate your time because I know that you are busy during knocking on your campaign in the Milton. And I know that's why you're on the phone. Thank you very much once again. Thank you. Thank you so much, Arif Bhai. Thanks a lot. Again, you have an excellent day. तो नाज़रीन, ये थे नदीम अकबर खटाना साहब, एमपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं मिल्टन राइडिंग से, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी मतलब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कई दूसरे मेंबर्स के साथ इन्होंने इलेक्शन में उनको हेल्प आउट किया है। अब खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक ज़ोरदार कंपेन इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर रखी है मिल्टन के अंदर। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे मिल्टन के अंदर। तो नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम था कैनेडा डे के स्पेशल के हवाले से, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने साथियों से सुनी और आज जो हमारे मेहमान थे उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि चंद चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी कनाडा को ग्रेट से ग्रेटर बनाने के लिए। और वो तमाम चीज़ों, वो चंद चीज़ें क्या हैं कि हमें अपनी जो माजी की गलतियाँ हैं उसको दोबारा से अहाता करना पड़ेगा। उन गलतियों के ऊपर अपने आप को जो है ना अपोलोजाइज़ होना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए हमें उन गलतियों के ऊपर। और उन गलतियों को एक्नॉलेज करने के बाद उन तमाम लोगों को जो कि इस गलतियों की वजह से जिन्होंने सफ़र किया है उनको कोई कंपनसेशन देने की ज़रूरत है, उनके ज़ख्मों को ऊपर मरहम रखने की ज़रूरत है, उनको गले लगाने की ज़रूरत है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये
इंडिजीनियस का एक इशू नहीं है, और भी इश्यूज़, इस्लामोफोबिया का इशू भी हमारे यहाँ जो है वो अभी आपने पिछले दिनों सुना, अभी 2 लड़कियों के साथ जो एडमिंटन के अंदर जो है उनके हिजाब को की वजह से उनको धक्का दिया गया और एक को चाकू भी मारा गया है, वो ज़ख्मी हुई हैं, और ये तमाम वाक़यात भी जो है ना वो हो रही हैं। और अभी जो मैं टोरंटो इसके 360 न्यूज़ के अंदर मैं सुन रहा था, ख़बरें 36 न्यूज़ के अंदर CTV की जो न्यूज़ है उसके अंदर ये बात सुन रहा था कि जो 10 आउट ऑफ 7 जो वुमेंस हैं उन्होंने कहा है कि वो अपने हिजाब पहनने की वजह से जो है वो इनसिक्योर हो गई हैं, और इस बात का उनको अंदेशा होता है कि कोई आदमी उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो चला आ रहा है। इसी तरह ब्लैक लाइफ मैटर्स के इश्यूज़ हैं, ब्लैक कम्युनिटीज़ के साथ इनजस्टिस होता है। इसके अलावा जो है और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो जेंडर बेस्ड इश्यूज़ हैं उनके साथ, उनके मामलात के ऊपर भी काफ़ी जो है वो भी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इस हवाले से जो एक जो है वो हमें इस बात पॉलिसी लानी पड़ेगी, जस्टिस सिस्टम लाना पड़ेगा जिसके अंदर तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी ज़बान से हो, किसी चीज़ से हो, वो जो है उनके साथ यकसा सलूक किया जाए, उनके साथ इक्वल जस्टिस उनको फराहम किया जाए। और यही हमारा मैसेज जो है वो कनाडा डे के ऊपर होगा। और इंशाल्लाह ये एक ज़बरदस्त मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, इसके अंदर हज़ारों लेक्स हैं, पानी है, माउंटेन्स हैं, और हर हफ्ते जो है वो हम इस खूबसूरत मौसम के अंदर बाहर जाते हैं। और आफ्टर कोविड-19 दिस द कमिंग वीकेंड इज़ अ ग्रेट वीकेंड कि अब जो है वो आउटडोर जो है वो 25 लोग जो है वो 25 लोग की गैदरिंग आप कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलें और इन्जॉय करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट द वैक्सीनेटेड इन ऑन बिफोर दिस कनाडा डे। और दिस इज़ अ टाइम कि गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा सा जो है वो खोला है चीज़ों को, ताकि लोग जो है इन्जॉय कर सकें, ताकि लोग जो स्ट्रेस के अंदर थे वो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो कम हो और दोबारा से ज़िंदगी जो है वो रूटीन की तरफ जाए। उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क कनाडा को बहुत तरक्की अता फरमाए, यहाँ पर अमन और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान फरमाए सबके लिए, और हमारे हुक्मरानों को जो है वो हिदायत फरमाए कि वो जो है वो इंसाफ के साथ इस मुल्क के तमाम कम्युनिटी के साथ इंसाफ कर सकें। इंशाल्लाह आरिफ जहांगीरी जो है अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Is there a road to hope? If there is, we would walk that road for as long as is needed. And that hope is education. Imagine walking 6 hours every day, 36 hours a week, 144 hours a month to school. Education works for Hamza because it gives him hope for change. ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद